Yeah, hi Monica. We are live now on YouTube. You can start. Yes. Are we live? Yes, we are. All right, great. Very good afternoon to all the student teams that are here today. I welcome you to the Student Innovator Program session number 3. Today's session is going to be about product development and proof of concept. But before we do that, I want to do a quick recap of what is Student Innovator Program. So, Student Innovator Program is what helps you continuously refine your project. It gives you an opportunity to work with industry and academic experts and turn your project into a tangible product. You have the opportunity to engage in conversations, ask critical questions, get feedback from your peers and mentors. This is a platform for you to grow from a student innovator to a student entrepreneur. Right. And in the last 2 sessions, we have seen a lot of things happen. We have learned a lot, gained a lot of insights. So, the first session was on design thinking, and we saw what are users, what is a problem statement, what is a success criteria. We looked at how can we frame a simple how might we questions. We looked at our second session in which we saw refining our problem state prototypes. We learned about how we can better our problem statements, the various methods in which we can better our problem statements. We also looked at prototypes. What is a prototype and how is it different from a final product? We looked at how a product goes through a journey of being a prototype, then an MVP, and then it becomes a product, a final product. So we have already done this, we've already come this far. Now we are going to go forward. And for that, we have Swastik Suman from Atal Community Innovation Center, VGU. He is the Associate Incubation Manager. He will be taking us on this journey today. Thank you, Swastik, for being here with us. Thank you so much, Malik, for giving me opportunity presenting about the product development and prototype or proof of concept. So do let me share my screen for once and we can proceed accordingly. Do let me know if my screen is visible. Yes, Swastik, it is visible. Okay. So, yeah. Yeah. So today's session based on product development and proof of concept. It's all about how we can develop product and how what kind of proof of concept can help to develop a perfect and final product before going to the market. So before diving deeper into the slides, I want to take a moment and to take a ice-breaking question for all the participants here. So question is, अगर आपका फोन किसी एक दिन पूरा काम करना बंद हो जाए, so आप सबसे ज्यादा क्या मिस करोगे? You can ping your answers in the chat box, and we can take 2-3 answers forward, and we can take the slides further accordingly. If your phone stopped working for one day, what would you miss the most? We are receiving some answers, Swastik. People are talking about how they will miss their contacts, they will miss information, communication. No, Monica, I'm not getting any answers from the chat. It's on the YouTube live chat. Okay.
So how I can take those answers, how I can see those answers. I don't think you'll be able to see them on this thing, but you can just ask me for any answers and I can tell you what they're sharing. Sure, sure, sure. So as you said, the missing of contacts, missing of photographs, or missing of any important application जो हम हर दिन यूज करते हैं, तो ये काफी बेहतरीन आंसर्स है जो हम डे टू डे लाइफ में फेस कर सकते हैं अगर हमारा किसी भी दिन अगर फोन काम करना बंद हो जाए, तो ये चीज काफी हम लोग ज्यादा मिस करेंगे. So before jumping into the perfect slides, let me ask you something that what or how many of you ever thought a coolest idea before joining this program, like any gadget or application, या कोई ऐसा fun solution या फिर ऐसा कोई problem का solution आपने निकाला है जो आपने स्कूल में फेस किया, अपने घरों में फेस किया या फिर अपने प्लेग्राउंड में फेस किया? Do let me know if you like having any answers or any idea you got during this kind of problem. So today we are going to learn how those small ideas can actually become a real product to the people to use in the real world. And to make it possible, I'll take you through a short imaginary story of three school friends जिन्होंने एक idea को turn किया into a real product for the real market by step. So एक स्कूल में तीन दोस्त थे, आरव, मीरा और रोहन. उन्होंने नोटिस किया कि उनके कुछ क्लासमेट्स पानी पीना भूल जाते थे आफ्टर देयर स्पोर्ट्स क्लास और स्पोर्ट्स डे, जिनका सीधा सीधा इफेक्ट उनके हेल्थ पे, उनके स्टडी पे और उनके अदर एक्टिविटीज पे इफेक्ट हो रहा था. So what Arav, Meera and Rohan thought that why not to make a smart water bottle to remind us to drink water on time. So further उन्होंने इस आइडिया को टेस्ट किया बाय सेटिंग अ टाइमर और अलार्म ऑन अ फोन, जहाँ पे उनको रिमाइंडर मिला हर समय जहाँ पे उनको पानी पीना चाहिए. और इस सेगमेंट को हम लोग प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बोलते हैं. उसके बाद उन्होंने एक बेसिक वर्जन बनाया एक नॉर्मल बॉटल में बजर अटैच करके. फिर उन्होंने टेस्ट किया जिसको हम लोग MVP बोलते हैं. फिर उसके बाद they gave those normal water bottle with the buzzer attached to their classmates. Their classmates tried that out. Some of them loved it. Some found some problem like अगर ये लंबे समय तक नहीं चला तो हम लोग क्या करेंगे? ये बजर कुछ ज्यादा ही आवाज कर रहा है. ये बजर थोड़े बहुत शॉक दे रहा है हमें. So this was their trial stage of the product. फाइनली ये सब कुछ फीडबैक में लेने के बाद, कुछ इम्प्रूवमेंट करने के बाद डिजाइन में, फिर उन्होंने एक बेटर वर्जन लॉन्च किया इन द लार्जर लेवल, जहाँ पे वो अपने क्लासरूम से निकल के कैंटीन में गए. कैंटीन के बाद कुछ हायर अथॉरिटीज को पिच किया. उसके बाद उन्होंने दूसरे स्कूल्स और दूसरे कॉलेजेस और दूसरे इंस्टीट्यूशन से कोलैब किया और इसको हम लोग या फिर इस स्टेज को हम लोग मार्केट लॉन्च बोल सकते हैं. तो अगर देखा जाए तो उन्होंने एक सिंपल जर्नी को फॉलो अप किया, जहाँ पे उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, फिर आइडिया निकाला, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बिल्ड किया, MVP बिल्ड किया, उस प्रोडक्ट को ट्रायल किया और फिर एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने उसको लॉन्च किया. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड, विल टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स वी कांट लिव विदाउट. Drop your answers in the chat box and Maulik will let me know that what products or what kind of product you generally want in your day-to-day life or what kind of product you can't live without. Maulik, do let me know if their answers got pinned up in the chat. I think a lot of people are saying their phones. Okay. Mobile, definitely, yes. Okay. Great. Laptops. Okay. Thank you so much, Malika. There are like many examples or many other kind of products what we and they can't live without. So here we have some other headings or main headings we can talk on, like smartphones. Why smartphones? It made our day-to-day life digital and easy. Second is UPI and digital payments. India nowadays is now being cashless. We don't use
much paper and cash to transact. Third is AI tools. ChatGPT can be the best example for AI tools. Quick commerce, OTT platforms, edtech and AI learnings, electric mobility and wearables, right? There is a line set. If suddenly UPI, Swiggy or ChatGPT stopped working tomorrow or today, how would you or your life would be affected? Any answer on this, guys? Do we have any answers on this, Malika? Yes, they're talking about how it will be very difficult for them to continue Great, surviving. great, great. That's a very generic response that I want to hear. It would be like very, very difficult in the current time or in the current market की काफी ज्यादा हार्ड हो जाएगा अगर हमें एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला और गूगल में भी नहीं मिला तो देन वी कैन डू चैट जीपीटी बट चैट जीपीटी ही बंद हो जाए तो फिर हम आंसर कहाँ से पूछेंगे राइट इट्स वेरी ग्रेट सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड why products matter nowadays. So we have taken a very, very basic example here, how television got evolved from day-to-day life and got converted, or we can say, उसका percentage of uses अभी के time पे क्यों कम हो गया in comparison to uses of percentage of OTT platform. हमने एक थोड़ा सा 5 step का evolution दिखाया है कि how television get involved into OTT platform. If we take some basic point of television, तो उसमें लिमिटेड चैलेंज हुआ करते थे शोज के फिक्स टाइम हुआ करते थे और काफी ज्यादा एड्स आते थे राइट तो हमने कुछ प्रॉब्लम्स निकाला जहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम ना के बराबर देखने के लिए मिली पर्सनलाइजेशन में बिल्कुल ना के बराबर था हमें कुछ कंटेंट रिस्ट्रिक्ट किया गया था फिर टेलीविजन को ओटीटी में इनोवेट करने के लिए जिस इनोवेशन का हमें हेल्प लेना पड़ा वो पहला चीज इंटरनेट स्मार्टफोन्स प्लस स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी फिर कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म निकले जैसे नेटफ्लिक्स प्राइम हॉटस्टार एसेट्रा इसके निकलने के बाद हमें ऑन डिमांड हमें पर्सनलाइज कंटेंट ग्लोबल कंटेंट और कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमें कुछ पाबंदी नहीं लगाया गया And the last point I would like to say that why OTT platform is important today. It's give us flexibility to choose the personalized content and main and most important thing borderless entertainment. ये किसी भी जोग्राफिक एरियाज को बाउंड नहीं करता या फिर हमें हर तरह का दुनिया के हर कोने का कंटेंट हमें शो करता है मूविंग टू आवर नेक्स्ट पेज here we'll talk about the journey of a product where every big company uses this kind of steps to be a market namer. The first step we have like idea, where we spot a daily problem around us. Then we have research, where we check if other faces or if they really want a solution or not. Third step is all about POC, where we take a mini test where the idea will work or not. Then we'll move forward with the prototype, building our first draft or drawing our model or our software designs. After that, we'll take several feedbacks from our family, friends, or our colleagues, or from our surroundings, or from the public eye, where they'll show and will they show their point of view and how we can refine those ideas into a perfect way. We'll follow up all these steps to take further into the next level, that is MVP, where we will build a simple version of the core features. Then we'll try the product into the market, and then we'll launch to the larger level, to the more people and the larger scale. Moving forward, for the first step, we'll talk about idea, where we'll spot the problem. So basic example में हम लोग ये बात कर सकते हैं कि how we missed favorite show time on TV. Then we can watch the same thing on Netflix or Geo Hotstar or any other platform of OTT anytime, everywhere, anywhere, can we say. So here I do have an activity for you all guys. List any one daily problem that you face in your like doing your task or in any matter of thing. Have we received any answer, Malika?
Yes, I'll just check. Bad roads, Oh, lot of ads, understood. Bad roads. Great. interruptions. Great. Okay. So we are like situating in the same TV and Netflix wale problem pe hi. That's good. That's cool. So if we talk about the more ads, there are several services that जो YouTube ने provide करना शुरू किया या फिर Spotify का हम example ले सकते हैं where they show up the subscription वाले part में कि आप subscription लीजिए और ads नहीं ना के बराबर या नहीं आएगा, right? So that's the solution where the channels spotted the problem and gave the solution. Take the subscription and like छुटकारा पाओ अपने advertisement से, right? Moving forward to step 2, we have all about research, how research will validate our problem or solution in face of that. So in research, we generally see or we हम यही चाहते हैं research में देखना कि how people do really face those problems जो जिसका solution हम निकाल रहे हैं, right? फिर how do they currently solve it? जो problem का solution हम निकाल रहे हैं, क्या वो same problem वो face कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो अभी के टाइम पे वो उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे हैं या फिर उसको कैसे उसको सॉल्व कर रहे हैं टर्शरी वुड दे बी विलिंग टू टेक और ट्राई समथिंग न्यू जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं जिसका सॉल्यूशन वो निकाल रहे हैं और हम भी निकाल रहे हैं तो क्या वो पब्लिक हमारे सॉल्यूशन को एडजस्ट कर पाएगी या फिर ले पाएगी तो ये चीज़ हम रिसर्च में सर्वे लेते हैं इंटरव्यूज के थ्रू या ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं there are different methods where we can like do research some following pointers are like mentioned like use surveys interviews or even a quick polls will work most important of a p truly works देख के समझते हैं सामने वालों को कि क्या ये मेरा प्रोडक्ट यूज करेगा या नहीं करेगा do let me know guys if you have any question till now any question till now is all about proof of concept great thank you Yes. sure so हमारा थर्ड स्टेप प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए आता है प्रूफ ऑफ कंसेप्ट अगर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट का हम छोटा सा डेफिनेशन देखें या फिर एक बहुत बेसिक जेनरिक डेफिनेशन देखें और समझने की कोशिश करें तो उसका सिंपल मतलब ये होता है अ मिनी टेस्ट बिफोर स्पेंडिंग बिग टाइम या मनी एक छोटा सा टेस्ट रन करना बिफोर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी एंड योर एनर्जी टाइम एंड एफर्ट्स सो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने OTT प्लेटफॉर्म से ही कोरिलेट किया है 2007 में नेटफ्लिक्स ने अपने आप को टेस्ट करने के लिए एक वॉच नाउ को लॉन्च किया था यूएस में जहां पे उन्होंने लिमिटेड लाइब्रेरी ऑफ 1000 टाइटल्स को लॉन्च किया था और वो सिर्फ विंडोज और पीसीस में ही थे जहां पे उन्होंने वैलिडेट किया कि कस्टमर उस प्लेटफॉर्म पे एक्चुअली मूवी देख रहे हैं और देखना चाहते हैं और ये सब उन्होंने ये टेस्ट किया बिफोर इन्वेस्टिंग अ फुल स्केल स्ट्रीमिंग लाइन उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगाया बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया इस चीज़ पे और ज़्यादा एनर्जी
Uh, I think there's been a little technical glitch, but we will come back with Swastik. He will be continuing his session. But so far, I'd love to understand from you guys what you have learned so far, and आप लोगों ने आपके कोई questions होंगे या कोई आप अपने product पे feedback लेना चाहेंगे, you can put it on the chat box and you can put your questions over there. I think we have Swastik back. Yes, Swastik is here, so he will take the second. For the yeah. So so yeah. तो इसके पहले हमने बात किया था प्रूफ ने अपने आप को टेस्ट करने के लिए एक वॉच नाउ के नाम से एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, जिसमें लॉन्च हुआ था। उस समय उन्होंने एक राइटर के साथ अपनी लाइब्रेरी पे लॉन्च किया था, जहाँ पे उन्होंने समझा और देखा कि कस्टमर एक्चुअली उनके मूवीज देख रहे हैं ऑनलाइन, और वहां से उन्होंने गॉच किया कि इस पे हम लोग अपना टाइम, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं टू स्केल इन द फुल लार्ज लेवल। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, here we have step 4 of prototype as equals to first draft. Yeah, so here you can like turn your idea into something visible or usable. Swastik, we are not able to see your slides. If you could share your screen. Is it visible now? Not yet. Maybe you can switch off your video and maybe it'll help. It's not visible just yet. Is it visible? No, it's not visible, Swastik. Uh, yes, Swastik, it's visible now. You can go ahead. Swastik, please go ahead. You can. It was visible. Yes. Swastik, are you there? Malika, can you hear me? I can hear you. Yes. Just give me 10 seconds. If Swastik's not able to speak, I'll go forward. Right. No problem. That'll be great, Gaurav. All right, student, please stay tuned. We are just fixing the technical error and we will be back with the presentation.
Gaurav, we could go ahead. That'll be great. We're sorry for the technical glitch. We have solved it now. So we're just coming All back right. in 10 seconds. I'm really sorry for the trouble. No, that's totally fine. I'm sure our students are waiting. Yes. Hi, am I audible? Yes, Swastik, you are. But my voice is like echoing a little bit. Is it the same that? No, it's good, Swastik. We can hear you. Just share the screen. Okay. Okay. Yeah, is it visible? Yes, Swastik. yes, we can go ahead. Okay. So here we'll talk about the prototype and first draft, where we generally turn our idea into something visible and usable, where we can like take 2 3 kind of categorical pointers to sketch on papers, mock up in PowerPoint, or do Canva, or do some functional coding for software. Simple working model with cardboard or electronics. Here we have a little formula like prototype is equals to first draft, not final product. Moving forward to our step prototype itself, we have a little bit of example of how Tesla, Apple Computer, Amazon, and Facebook launched their first prototype by drawing into a paper, by coding something for Apple, how Amazon started there from book selling, and how Facebook got launched through their UI and UX design. Moving forward to step 5, here we will learn about why it's important to take feedback and what we can like learn from feedback and how we can improve from the same. We should always remember that feedback isn't a criticism. It's always a free consulting where we can like understand about more, or we can take more clarity on our product. क्या वो उस प्रोडक्ट को या सर्विस को यूज करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या फिर ऐसा क्या मिस आउट हो रहा है जो हम अपने प्रोडक्ट्स में और एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हैं. Moving to step 6 is all about MVP. MVP stands for like minimal viable product, where we generally talk about a working version with only core features, or which can help or test the real user before adding some extra features. Example, we will taking about Hotstar.
हॉटस्टार जब लॉन्च हुआ था 2015 में, उन्होंने सिर्फ लाइव क्रिकेट को स्ट्रीम और स्मॉल सेट ऑफ टीवी को शो अप किया था. Next is all about product trial and test before your launch. So trial में हम लोग ये देखते हैं कि how we can like scale the MVP or test the real user in the real market, and why it's matter a lot to spot the issues, to study the behavior of the customer, and to refine features as per the customer demand. Here we'll study about the example of Netflix, जहाँ पे उन्होंने first test किया था by online streaming with limited US audience before getting into the global rollout. Do let me know if you have any questions till now. Monica, do we have any question? No, Swastik, we can go ahead. Okay. So here we have our step 8 on market launch, or what we can tell that what all about is market. To introduce to the real users, for example, if anything related to school or college or local community, or as we talked about the story जो हमने बॉटल का डिस्कस किया था, जिन्होंने क्लास से लेके फिर स्कूल के अथॉरिटीज़ को टेस्ट किया, फिर उसी स्कूल से बाहर निकल के उन्होंने अपने एक कम्युनिटी बनाया. In this stage of market launch, we can easily collect the early data and we can refine the product and we can like come up with the perfect product or service in the market. Here we can take the example of Facebook. How Facebook started just in Harvard and expanded in a year to the global reach. Next, we'll talk about, or it's a kind of activity where I'll be giving some questions, or you can like drop your problem. If as a student kid, you are feeling heavy to carry your school bags, so what kind of solution you will be figuring out for this problem? Drop your answer in the chat box, please. Monica, do let me know about the answers. Yes, yes. Can you repeat the question, Swastik? Okay. So the question is, or you need to find a solution. Carrying a heavy school bags. So what kind of solution you'll figure out in respect to this question? Right. So somebody is saying they'll make a suspension system for the Uh-huh. backpack. Okay, Somebody sharing they'll go to the gym. nice. So here we have second activity question. Losing pencils every week. हर हफ्ते हर दिन पेंसिल खोना या पेन का खोना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, बहुत पैसे लगते हैं उसमें हर दिन खरीदने में. तो इसके लिए हम लोग क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? They're saying we'll use digital notebooks. Oh, that's great. So if we get these kind of solution with respect to this question, so how we can build a journey kind of thing जो हमने पहले डिस्कस किया, प्रोडक्ट से लेकर मार्केट लॉन्च के बीच में हमें ऐसा क्या क्या करना पड़ेगा कि हम मार्केट में जल्दी उतरे भी और हम अच्छे सामान के साथ उतरे. Ping your process or your answers in the chat box, and we'll take any 2-3 solution for that. Lots of answers coming still for the pencils. Okay. Yeah. So what kind of answers we are getting? So they are saying that we'll use a collective pencil box so that it's not for an individual. Okay.
We will use magnetic pencils that will stick to the this thing. Zips. We'll have we'll use a pencil box instead of pockets for pencils. Nice. Yes, a buzzer pencil that makes Oh, a sound if you lose it. Yes. I think काफी बच्चों ने इस स्टोरी से रिलेट कर लिया है. Yes. नाइस. सो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि आपने जो अभी सॉल्यूशन प्रेजेंट किया है, हाउ द जर्नी विल लुक लाइक, कि आप कैसा प्लान करोगे, फिर उसका रिसर्च कैसे करोगे, फिर क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है, और उसको सॉल्व करने के लिए आप लोग और क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, और मार्केट लॉन्च कैसे करोगे. I think they're still thinking. They're taking their time with it. ओके. Should I proceed to next slide? Yeah, please go ahead. So, Sure. in the Do let me meanwhile, know if we receive any if there answer. are any responses. Yes. Okay. I think they're talking about how they will identify the problem, do some research, Mhm. and create a POC. Okay. So that's what they're sharing. Understood. Yeah. Great. Slides here wrap up and takeaways, that what kind of learning we should take away from these kind of product journey or kind of thing. So the first one is like ideas are everywhere. हमें सिर्फ अपने नज़रिया बदलनी है और अपने अराउंड देखना है कि हम फेस कर रहे हैं और उसके हिसाब से कौन सा सॉल्यूशन आ सकता है. रिसर्च वैलिडेट्स द वैल्यू. रिसर्च हमें हेल्प करता है कि जो हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं क्या वो वर्थफुल है हमारे पब्लिक के लिए या फिर हमारे मार्केट में उतरने से पहले. पीओसी, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, सेव्स टाइम एंड मनी. वो हमें हेल्प करता है ज़्यादा टाइम और मनी इन्वेस्ट करने से पहले via testing something in a very small scale. Then we talk about prototype, that is equals to first draft, जिसको हम लोग सिंपली स्टार्ट करना चाहते तो उसके लिए हम लोग कुछ नॉर्मल सा ड्राफ्ट करते हैं. नेक्स्ट इज फीडबैक. फीडबैक जो हमें हेल्प करता है ग्रो करने में, जहाँ पे हम रिवाइंड करते हैं अपने रियल ओपिनियंस को लेके. MVP इज द कोर वर्जन, जहाँ पे हम जो बिल्ड कर रहे हैं विथ मिनिमल फीचर्स. प्रोडक्ट ट्रायल इज इक्वल्स टू टेस्ट रन, जो हम लोग ग्रुप स्मॉल ग्रुप में या फिर रियल मार्केट में ट्राई करते हैं. द लास्ट थिंग कम्स विथ मार्केट लॉन्च, दैट इज टोटली इक्वल्स टू रियल यूजर्स विद द रियल लेसन्स. एंड एज आई सेड कि मार्केट लॉन्च इज इक्वल्स टू रियल यूजर्स एंड रियल लेसन्स. फीडबैक इज कॉन्स्टेंट एंड वी शुड वर्क ऑन फीडबैक, ताकि हम जो प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में सर्व कर रहे हैं वो हमारा रेगुलर रिफाइन होके आते रहे. So yeah, that's it. Thank you so much for attending this session. Do let me know Thank you if you so much, guys have any Swasti. question. Monica, just one thing wanted to add. Swasti, can we go to last slide? So I'll just take one example to make the summary a little more easier. That just imagine as compared to the previous slide, you may have created something for school bags or pencil, right? So now imagine that how exactly you create a POC and all of the entire process, something very important. So what exactly you should do is that you should create a basic version of product in whatever you are creating. और जब आप प्रोडक्ट को बनाते हो तो आप सिंपली पहले जो भी अपने कॉन्फिडेंटीज हैं अराउंड, जो आपको ट्रस्ट करते हैं, जो आपको एक ऑनेस्ट फीडबैक देंगे, आप उनके साथ टेस्ट करते हो. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपने लूजिंग पेंसिल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ बनाया तो आप उसको अपने ही क्लास में टेस्ट करिए and get real time feedback that what they are saying and how they are understanding it, and you improve the product. Once you improve that, you go to the next phase, which is in the scenario is that maybe you go to your school canteen and you demonstrate your product and you start selling your product there.
and you start to capture the entire school. अब इससे क्या होगा कि आपको और feedbacks मिलेंगे, which will not dent your brand and the credibility because they know you personally and they know that you come from the same school. So they will help you also conserve your brand image and the credibility of the kind of work you are doing. Once you have more feedbacks, you again further improve the product, and then you start to go to the market where you collaborate with other schools saying that, hi, this is something, a product we have built, and we are currently already working with this school, and we intend to scale this with your school as well. So that will help you in terms of scaling in a strategic manner, जहां पर आप प्रोडक्ट को लगातार improve भी कर रहे हैं और आप लगातार नए कस्टमर को भी acquire कर रहे हैं. So that's one method I think everyone should use. Again, to quote another example is that when Uber Eats came to India, they were also testing. For a lot of you who don't know, Uber Eats was a competitor for Swiggy and Zomato in India, which later got acquired by another company. So what they did is that उन्होंने अपनी employees को रोजाना के discount coupons दिए for food ordering. And they tested the entire value chain कि kitchen को खाना बनाने में कितना टाइम लग रहा है, डिलीवरी होने में कितना टाइम लग रहा है, क्या एक्यूरेटली ऑर्डर पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है. सो जब आप सॉफ्ट लॉन्च करते हो इस तरीके से, तो आप ये भी इंश्योर कर पाते हो कि जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है वो किस तरीके से साथ में आ रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि लगातार जो वैल्यू आप डिराइव करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस से वो लोगों तक पहुंच रही है. So once you go live with the real customers, you will not have those challenges. और जो challenges आपको potentially आ सकते थे वो आपने already risk को mitigate कर लिया है और उनको solve कर दिया है. So that's the better way of going from prototype to market trial. और उसके बीच में आपको क्या क्या करना चाहिए था. Thank you so much, Gaurav, for that quick recap and very nice way of explaining to the students ki kaise idea turns into a product trial and market launch. So that's amazing. I believe students have had a couple of questions. I thought I'll ask on their behalf. How do you prioritize the features of an MVP? Like, there can be a lot of features, right? So how do you decide which features are the best ones to go for your MVP? Sure. So I think for MVP, जो important है, which is name itself says minimum viable, right? So for example, अगर मैं आज let's say Uber जैसा एक platform build करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं एक ride booking facility facilitate करूँ, right? So the minimum viable product is I should be able to book the cab with the basic features. For example, मेरी pickup location accurate हो, मैं राइड को बुक कर पाऊँ. Similarly on the driver side, ड्राइवर्स जो हैं वो accurately मेरी लोकेशन देख पाएं और वो राइड को एक्सेप्ट कर पाएं. Meanwhile, I should know estimated time of arrival कितना होगा, कि वो कैब मुझ तक कितने टाइम में पहुंचेगी, उसका एग्जैक्ट फेयर क्या होगा, तो पेमेंट इंटीग्रेशन होना जरूरी है. तो इन शॉर्ट ये मिनिमम प्रोडक्ट्स हैं. उसका UI UX क्या होगा, कितना ऑप्टिमाइज हो सकता है, कितना फास्ट हो सकता है, ये मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है. ये आप कॉन्स्टेंटली लगातार अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? सो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जो फंक्शनैलिटी आप ऑफर करना चाहते हैं या जो जो जिस सर्विस या प्रोडक्ट के एक्सचेंज में आपको ट्रांजैक्शन ऑफ मोनेटाइजेशन होगा, कि आपको कोई यूजर एक फी पे करे या प्रोडक्ट को खरीदे, तो उसके लिए जो उसकी बेसिक नीड है वो पूरी होनी चाहिए. तो सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर आप पेंसिल का ऑल्टरनेटिव बना रहे हैं, तो पेंसिल की फंक्शनैलिटी इज कि पेंसिल से मैं लिख सकता हूँ, राइट? अब उसका डिजाइन क्या होगा, उस पे क्या एडेड रबर होगा नहीं होगा, उस पे ब्रांडिंग क्या होगी, दैट इज एन एडिशनल एलिमेंट टू इट. सो MVP हमेशा ये कहता है कि आपका जो टास्क परफॉर्म होना है इस प्रोडक्ट से वो परफॉर्म हो जाए और आपको कस्टमर कह पाए कि हाँ, आई एम एबल टू राइट इट वेल, दिस सो स्मूथ पेंसिल, दिस मे बी हैव अ लॉन्गर लाइफ देन एज कंपेयर टू एग्जिस्टिंग पेंसिल्स. फिर उसके बाद में आप उसको डिजाइन वाइज, उसको फंक्शन वाइज और एड ऑन कर सकते हैं, जो आपको मार्केट में ज्यादा पेंसिल्स को सेल करने में हेल्प करेगा. सो दैट्स समथिंग एडिशनल. Thank you so much, Gaurav. That was a great answer. I'm sure our students have understood better what an MVP is.
Also, like, to look at a POC, what kind of metrics they should track when they're making a POC? Like, what do you suggest? So again, the POC is, I think, is term again says a proof of concept. So which is यहाँ पर जैसे आप सोचते हैं कि आप पेंसिल बनाना चाहते हैं, वो एक assumption है, और आपने पेंसिल बना ली है जिससे आप लिख सकते हैं, वो उसका वैलिडेशन है. सो एट द एंड व्हाट मैटर्स इज दैट जो आप सोच रहे हैं कि ये टास्क जो परफॉर्म होगा, उसका पहला वर्जन जो आप बनाते हैं जिससे वो टास्क परफॉर्म हो रहा है, हो सकता है उस पेंसिल का जो ग्रेफाइट है उसके ऊपर की इतनी स्ट्रॉन्ग कवरिंग ना हो, या वो ग्रेफाइट लगातार टूट रहा है, विच इज ऑल राइट, बट आप एटलीस्ट लिख पा रहे हैं, दैट समथिंग सॉल्व द प्रॉब्लम. सो व्हाट यू आर थिंकिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम विच इज बाय राइटिंग थ्रू दैट पेंसिल is a proof of concept. Definitely that is the first version of it. आप उसको लगातार अलग अलग वर्जन बना सकते हैं. That's the second element. So जिसको हम लगातार फीडबैक लेकर के MVP में कहते हैं. So POC is always आप जब उसका बेसिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, और it could look as ugly as you can think. That's completely okay. But POC का मेन मकसद जो है वो जो है आप लिख पा रहे हैं उस पेंसिल से. That's it. And that is what the POC stands for. You so much for those very insightful answers, and thank you so much, Swastik, for a great session. I'm sure students have taken a lot from this session, a lot of takeaways, and I'm sure they're working on their prototype as well, from based on whatever they're learning today. And I would like to now close the session here. Thank you so much, everybody, for being part of this, and thank you so much, students, for taking the time to be part of this session. Please ask, I would like to reiterate again, please ask as many questions as possible. Write to us. You can write on the chat box. You can mail to us. Please do. And you can also connect with our experts as they have shared on the screen. So do that. And thank you so much. Thank you for this session.